Hello students, welcome at KitKan Digital Learning. I'm your computer teacher. Today I am presenting you lecture number 7 and topic is the internet as a post office. From your book Keyboard of Computer Class 6 published by Oxford University Press. Today is Tuesday 27 June 2023. Before we start our today topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1. Like and subscribe your school channel so don't missing any video. Number 2. Carefully listen and watch video from start to end. Number 3. Find out the answer of the question from the video. Number 4. May watch multiple time video till find out the answer. Let's start our topic the internet as a post office. हमारा टॉपिक है अब इंटरनेट. The internet is a global network of interconnected computers and networks. The World Wide Web is a service that uses the internet infrastructure to provide digital devices and applications with access to websites. अब इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में हम लोग जो है यूज़ करता है हर कोई बंदा. ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए क्या होता है हमारा जो है मतलब एक दूसरे को हम मैसेजेस भेज सकते हैं, कोई चीज़ सेंड करनी हो हम इंटरनेट मतलब नेटवर्क के ज़रिए हम लोग सेंड कर सकते हैं. तो ये क्या हमारा इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क कहलाता है. यूजेस ऑफ इंटरनेट. द 5 यूजेस ऑफ इंटरनेट आर गिवन बिलो. अब जो 5 यूजेस हैं इंटरनेट के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं लेकिन ये मैं 5 बता रही हूँ. जैसे ईमेल सेंड करना, शेयरिंग फाइल्स, वॉच मूवीज़ एंड सॉन्ग सुनना और जो है अपने रिसर्च करने के लिए कोई भी चीज़ न्यूज़ देखना इंटरनेट के ज़रिए. ये सब चीज़ें क्या है इंटरनेट के ज़रिए देखी जाती हैं या तो फिर शेयर कुछ किया जाए तो वो इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे मॉडेम के बारे में. Modem stand for Modulator Demulator is a device connecting your home to your internet service provider through a physical connection. The modem translates the data from your ISP into a format that your home network devices can use. अब मॉडेम स्टैंड फॉर क्या होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होता है मॉड्यूलेटर डिमोलेटर. अब जो ये डिवाइस है ये क्या होती है कि अगर एक कंप्यूटर को मतलब दूसरी जगह उसको कोई भी नेटवर्क जो है भेजना हो कोई चीज़ भेजनी हो तो वो मॉडेम के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर में या तो फिर किसी मतलब नेटवर्क टेक्नोलॉजी थी उसके ज़रिए मॉडेम के ज़रिए जारी होती है. अब हम पढ़ेंगे वेब पेज के बारे में. अब वेब पेज वो होता है जैसे कि हमारे पास इंटरनेट पर गूगल क्रोम जो हम ओपन करते हैं. ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट पेज आता है वो हमारा वेब पेज होता है. फिर काफ़ी सारे हम उसके अंदर टैब्स अपने खोलते रहते हैं तो एक हमारी वो वेबसाइट होती है. ठीक है, जैसे कि हमारी फेसबुक का हमारे पास फर्स्ट वेब पेज आता है. ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ओपन करेंगे हमारी जो है मतलब सारे मैसेजेस मैसेंजर ओपन हो जाएगा. ये सब क्या हमारी एक वेबसाइट है. ठीक है, एक के पीछे एक और वेब पेज हो मतलब बहुत सारे वेब पेजेस हों तो हमारी वो क्या कहलाती है वेब पेजेस की मतलब वो वेब पेजेस होते हैं. ठीक है, फिर जो है उसके अंदर जो और एडिंग होगी वो हमारी क्या होती है वो Hope you enjoy वेबसाइट and होती learn है. basic concept of topic. Today we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project mark. As total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.